ग्रीन टॉपर्स, आपसे विनती कि डगआउट के सामने ना आए। जैसे वेलोर फिजियोथेरेपी का नाम सुना, महेंद्र जी दौड़े दौड़े चले आए। एक और यहाँ पर चौका मिलने की उम्मीद थी, पर लेकिन मिलेगी नहीं। बेहतरीन कार्य करते हुए यहाँ पर जयपुर क्रिकेट लाइव पर आप इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल देख सकते, सीधा प्रसारण जयपुरिया क्रिकेट मैदान पर यह टूर्नामेंट होता हुआ, शानदार आयोजन। एक अच्छा शॉट, यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट से इस गेंद को निकाला, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ और सीमा रेखा से दीदार करके 4 रन मिलते हुए बल्लेबाज को। हल्का सा विथ बल्लेबाज को जब जब मिला है, चूके नहीं यहां पर। इसी चौकी के साथ स्कोर बढ़कर होता हुआ 15 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे। पैर पर ये गेंद थी, शॉट फाइन लेंगे फील्डर, इसको गेंद को रोक लेंगे। अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है मकाको के बल्लेबाजों के द्वारा। मकाको के कप्तान टॉस के समय ये कह रहे थे कि कम से कम 80-90 रन बनाना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं उनके ओनर, टीम के ओनर ये कह रहे थे अगर टूर्नामेंट जीत गए तो जर्मनी घूमने जाएंगे। पूरी की पूरी टीम जर्मनी जाएगी घूमने के लिए अगर टूर्नामेंट जीत गए। दूसरी तरफ ग्रीन टॉपर्स के खिलाड़ी विवेक जी ने ये घोषणा की थी कि अगर आज का मुकाबला जीत गए तो चैंपियन उनकी तरफ से पूरी टीम को। I would request the players not to stand in front of the commentary box, please. हल्का सा विथ मिला, बैकफुट पे गए, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया वहां पर, और एक रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज मनीष, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जेंट्स की टीम ने 36 रन बनाए। वो मुकाबला विश्राम पर है, दूसरे मुकाबले की पहली पारी चलती हुई यहाँ पर। ये मनीष के द्वारा अच्छा शॉट, पिछला शॉट वहाँ हरमिंदर के द्वारा खेला गया था। एक चीज दोनों बल्लेबाज बढ़िया करते हुए इस पारी में कि सिंगल डबल चला रहे, बस लूज बॉल का इंतजार कर रहे हैं, जब भी लूज गेंद मिल रही है उसे प्रहार कर रहे हैं। एक रन और मिल जाएगा। एक रन आसानी से मिलता हुआ वहां पर सिंगल्स के रूप में इस ओवर में रन आए हैं अभी तक। तो 4 गेंदों में 4 सिंगल, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर होता हुआ 21। चश्मी अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रन बनाए, वो भले हाफ स्टॉप थी तो लेकिन कुछ रन जरूर बचाए उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में। इस गेंद की गति को कम करके जिस रफ्तार से शॉट खेला गया था,
आखिरी गेंद पावर प्ले की 22 बिना किसी नुकसान के। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। आज के अंपायर पीटर पाकर और रोहित। With that, we are done with the power play. After 3, score is 23 without loss. Z plus security अब यहाँ पर मैदान में आती हुई। जी ज्वेल्स की टीम ये कहते हुए कि काश अगर हमें कचौरी समोसे खिला देते तो हम 90 रन बना देते स्कोर बोर्ड पर। उद्घाटन आप भी कराइए, आपने चर्चा की है। So we are done with the 3 overs. The power play is done. Now you can have 5 fielders outside the ring. After 3, score is 23 without loss. This is good batting from both the openers of Makako. Bowler is telling the batter, don't worry, you don't need to bring the helmet. I'll not bowl at a pace of 150. Trying to set his field over here. Just making sure he's got fielders in the right position. They've got a cover, they've got a mid-off. They've got a shot mid-wicket and a mid-off inside the ring. Those are the 4 fielders inside the ring. Backward point, cover, mid-off and shot mid-wicket. That's a good strike. But straight to that long on fielder for a single. Everyone waiting to see the first maximum of this tournament. Who will be that batter who will get that first maximum? Squeezing this ball towards the backward point for just a single. Straight to the bowler, Konarand. Next match, Abbas Ruby taking on Gem Experience. I would request the captains of both the teams to be ready for the toss after the end of 6th over. Awas and Gem get ready for the toss after the end of the 6th over. Bowler was excited. And umpire just turning into that wide call over there. After this, the first innings, the second innings of the first match will resume.
catch it is the call. To take that catch, Jimmy needed to be a Superman. Yeah, but he forgot his costume at home. That's why he couldn't fly. With that, we are done with 4 overs after 4. Score is 31 without loss. Seems that captain wants to call out both the openers and send 2 new batters. But the batters who are out in the middle have denied the captain's call. And they're saying 1 more over. एक और ओवर खेलना चाहते हैं. (31 after 4 overs). 6 more overs to go of this innings. Down the leg side, he starts the over the wide. जी हाँ, आलोक जी का जो विकेट है उसके डिसीजन जर्मनी भेजी गई है, उसकी फुटेज अगली साल थर्ड अंपायर अपना फैसला सुना देंगे. इस बीच सीधे फील्डर के हाथ में और झटका लगता हुआ पहला यहाँ पर मकाको टीम को. दस मिनट पहले आपके विकेट का फुटेज भेजा गया है. अगले साल जर्मनी से आपको पूरा फैसला मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच. Breakfast is all set and ready. You can feed your empty stomach. So breakfast is ready. Quickly go and have your breakfast.
That's a good shot. Will he find the four? No, he'll find the man in the deep, but will just be a single. That's been swept away straight to that long leg fielder, just for a single. After 5, score is 44 with a loss of 1 wicket. Good effort there by the youngster over there, going back for a second. Good running. Putting the dive over there, but couldn't stop that one. It's a good shot, but can't beat the mid-off fielder. Going for a quick single, direct hit, he could be out, he misses the chance over there. Hitting it down the ground, fielder in the deep. Does well. Good effort there by Jimmy. Saving few runs for the team over there. That's a good shot. They had one more fielder backing that mid-off fielder, or that would have been a 4-run. Generating good pace over there, and that's 5 wide.
Wants a run, will not get the run. 56 on the board. We are into the 6th over. They're really going well. With that, 6 overs are done. 56 with a loss of 1 wicket. Lovely shot. Getting this one over the point for 4 runs. Good batting from Captain Amit over there. It's really looked positive. He's walked out with a positive intent. They want to get the runs. Thick and fast. At the toss, he mentioned that they want to get to 80, 90. Abhijit, on the other hand, he said that he'll look according to the situation and what they can restrict their position. That's down the leg side, wide. They have to control these extras. Cannot afford to give away these extras. 61 on the board with a loss of 1 wicket. We are into the 7th over. A warm welcome. That's flying in the air. This will be the first maximum. No, it's 4 runs. I thought we were just about to see the first maximum of this tournament. Lovely batting from Amit. Setting the tone and the tempo. Getting the runs thick and fast. 9 runs from this over. Slight width outside of some. They've got the protection in the deep. Oh, has he done well? Yes, he has. 2 more runs. Just will be a single. Straight to that shot fine leg fielder. Of this over. Runs have been put on over here by Makako Opal. Scooping this one. No chance for anyone to stop this one. That's going to be 4 runs. Good batting from Manish.
There is still a ball left in the over. It was 4 runs, then a wide, then a 4, then a double, then a single, another 4. Expensive one. Coming down the track, gets an outer edge. This has gone down to the third man. He wants to come back for the second Amit, but Manish just denied that second run. With that, 7 overs are done after 7. Score is 73 for 1. They're really going well. If they keep on playing like this, their Germany trip will be finalized. And now let's see when the second inning begins of the first game between Jewel's Pleasure and Green Toppers, where they're defending 37 runs against the Green Toppers. How will Jewel team do? Because now they've taken their energy. That's some coffee, tea, and breakfast. Three more overs left over here. Can they get 100? For that, they need to get 27 runs from the remaining 3 overs. They have to go at 9 runs per over. Going for a quick single, and will get the run easily over there. It's a no ball call from the umpire. It's a no ball call. The atmosphere is created for the free hit. Can we see the first maximum? There were 6 fielders outside the ring. That is what the umpire is telling. No arguments with the umpires. The atmosphere is all set. And Manish is warming up, doing all stretching. But the man who's on strike, it's Amit. I don't understand why is he doing all those stretching. He's not the one who's going to hit the big hit. Is he trying to generate some force and power which Amit will be able to take advantage? The atmosphere is all set. The signal has come from the umpire. It's time for a free hit. The field can change because the batter switch off the strike. Straight to the man in the deep, just a single. Dot ball.
सौरभ को 3 येलो कार्ड्स मिल चुके हैं, अगर एक और मिला डगआउट की तरफ से तो ये मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। ये ध्यान दे थोड़ा। और ये टीम के पास काफ़ी कार्ड्स हैं, कहानियां हैं। ये ज्वेल्स की टीम है। जी हाँ, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन बना किया है कप्तान ने मनीष को। अंकित बड़े चालाक निकले। अंकित को ये पता था कि ज्वेल्स की टीम उनको येलो कार्ड दिखा सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं खेल खेलने नहीं आया, मैं मोटिवेट करने आया हूँ यहाँ पर। After 8, score is this is 8th over in progress with 3 more balls left. Manish is making his way back to the dugout. Seems he's been called back by the captain. Indeed, the captain is out in the middle. The coach has just called him back. Wanted to send some fresh legs out in the middle. He's really tired. He's dropped his willow halfway. That's in the air. Fielder is there in the deep. Just will be a single. No, they're going to go back for a second. Good running. Excellent running. And if Manish, you need any treatment, Vellore is over here. You can attend the physio. और जिस तरीके से मकाको टीम से खबरें आ रही हैं कि मनीष आने वाले कुछ मुकाबलों के लिए रूल आउट हो सकते हैं। बैक इंजरी। Full toss ball. Wanted to go somewhere else, but it's gone somewhere else. But he'll take the result. 4 runs. Wanted to hit it towards the square leg, but in front of a wide-ish long on over there. With that boundary, score is now with that we are done with 8 overs, and after 8, score is 84 with the loss of 1 wicket. 84, 8 overs. देखिए मनीष जी बड़े फुर्ती से दौड़े दौड़े आए यहाँ पर फिजियो के पास और उनको ये कहा कि नींबू पानी बनाने का प्रोसेस बताइए। That's a good strike down the ground. 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. This is good batting from captain. He's really going well. With that boundary, the captain has moved on to 39, 11 runs away from his half century. This will be a no ball. A waist tight. No ball over there. Atmosphere again created for a free hit. Last time when a free hit was there, he only fetched a single. Will be able to fresh a big hit over here. Now the field can't change. That's a good strike. It's a flat 1 bounce into the fence for 4 runs.
With that, he moves on to 43, into the 40s now, the captain. Runs away from his half century. That's gone. First maximum of this tournament has come from the willow of Makako captain Amit. What a strike. He moves on to 49. One run away from his half century. Superb batting from captain. Aggression we've seen from the man. And there you see, he gets his half century. Wants to go back for the 2. Returning back for the second. Brilliant knock this has been from captain. A captain's knock. It has come in 21 balls. With 7 for 1 maximum. And 100 up over there for Makako. Half of the runs have been scored by captain of 102. This will be a no ball, and that's going to be 4 runs, 2. Another free hit coming your way. 107. Lots of run. Captain moving on a 55 with that boundary. GSFC, GOI Premier League, first half century and first 6 coming from the willow of captain's willow for Makako Amit. This is flying. This is going to be second maximum in the over. An expensive over. This has been 103. Sorry, 113 with that. 113 after 9 overs. 29 runs came from this over. Expensive over. 113 for 1. Captain batting on 61. I would request Joel's team to be ready for the fielding. Thank you very much. You've got a very difficult task on your hand coming up to defend 37 runs from 60 balls. A run out, but in a good cause to give the captain the strike. Because captain is really playing well. अधूरी चाय छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि इस मुकाबले को ख़त्म करना है प्लेजर्स की टीम. What a knock it has been from Captain Amit. Amit Toshnewal really playing a captain's knock over there. He's batting on 61 from 23 balls, 2 maximum, 8 fours.
This could be a wicket. Jimmy gets there but couldn't hang on to that catch over there. 2 runs to the captain. Getting into the huddle over there, Jewel's team, before getting into the field, they know they've got a big task on their hand to defend 37 in 10 overs. Gives room to himself and gets this one over cover for 4 runs. Brilliant from captain. 9th boundary of his innings. Really looking very good out in the middle. Solid, intent, positive. We've seen aggression from him. The aggression has been not from his mouth, but it's been from the willow. That's over the top of mid-off. That will be another boundary. 10th one in his innings. $123 for 2. Oh, that's a good strike. That's the 3rd max. Oh no, what an effort! Brilliant! Excellent. We thought it's gone for 6, but the umpire's made his call. That's 6 runs. Umpire has signaled this one 6. Yes, as per the rule, you have to first make the first contact in the play. He went outside and then he made the first. The first contact was outside the play. So that's a good call from the umpire, 6 runs. You have to at least make first contact inside the play. That's the 3rd maximum for the captain. Last ball of this innings. 129 on the board. So in 10 overs over here, Makako will have posted 130. 131 is the target over here for Topaz. Hello. हेलो हेलो अमित तोशनीवाल को यहाँ पे बुला रहे अमित कहाँ है अमित तोशनीवाल सारी टीम के कैप्टन ने मिलकर डिसाइड किया है कि मैन ऑफ द सीरीज देके आप नेक्स्ट मैच नहीं खेलोगे ठीक है अमित ने ओके कर दिया अमित नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा आपके पास आपकी ट्रॉफी उधर रखी हुई है प्लीज आप लेके और भागो घर पे अभी भैया घर तक ड्रॉप करके आएंगे इसके साथ साथ 3 लाख का चेक भी दे दो ना Second innings to commence away of the first match.
Jewels have got a big task on their hand to defend 37 runs in 10 overs. अमीर को मैन ऑफ द सीरीज के बाद एक 131 रन का लक्ष्य मिला है टोपाज को। इसके बाद दूसरी पारी खेली जाएगी दूसरे मुकाबले की। ये पहले मुकाबले की दूसरी पारी या ज्वेल्स प्लेजर की टीम अब फील्ड में उतरती हुई। सैंतीस रन का लक्ष्य यहाँ ग्रीन टॉपर्स को मिला है। Second innings just about to kick off. Both the openers are out in the middle. Vishal at the non-striker end, wicket-keeper batter. His idol is MS Dhoni. He's come all the way from Jharkhand to play this tournament. And his partner at the other end. First ball, full toss ball, couldn't put this one away.
Will this be first run on the board? Yes, it will be. First runs on the board. They've got that one run of a victory. Now they need to score the runs with their position score 36. Swinging into the right hand, they're getting some swing, some moment. White ball. Both the umpires doing really good job till now. That is outside off stump. Will this be wide? Yes, it will be. You don't have too much on the board to defend, and you can't afford to give away these extras. Both the umpires have come from Tamil Nadu. Zero 556. आखिरी कॉल है आपके लिए. अपनी गाड़ी कृपया रोड पे से हटाएं और पार्किंग में लगाएं. 0556. दूसरी गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, वरना मैन ऑफ द सीरीज में ये गाड़ी दे दी जाएगी आज. 6222. 6222. जिनकी भी गाड़ी है कृपया आप भी हटाएं, पार्किंग में लगाएं. 2788. 2788 कार नंबर जिनकी है ये भी ध्यान दें, प्रॉपरली पार्किंग में लगाएं. 5123. 5123 कार नंबर 5123. 2053. ऐसा लगता है कि पूरे टूर्नामेंट्स के अवार्ड्स पूरे हो जाएंगे इससे. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, ये सारी कारें दे दी जाएंगी उनको. तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये गाड़ी नंबर जिनकी भी 1 रुपया गाड़ी सही से लगाएं. 2053, 5123, 2788, 6222 एंड 0556. जिनकी भी कार है कृपया प्रॉपरली लगाएं पार्किंग में. दूसरी गाड़ी को आने जाने में दिक्कत हो रही है. एक बार फिर से मैं नंबर दोहरा रहा हूँ, जिनकी भी कार है कृपया पार्किंग में प्रॉपरली लगाएं. 0556, 6222, 2788, 5123 and last 2053. Thank you. Second over in progress, 5 without loss. The required run rate is 3.62. Current run rate, they're going just around 4. And a ball call from the umpire. With that, no ball, the score moves on to 8. Time for a free hit. That's been hit well. Will he get a boundary? No, just a single. No, they wanted to go back for a second, but only settled for a single. Manish Kothari and Vishal Subhan is out in the middle. Vishal has timed this one very well, but good fielding in the deep over there.
One-handed effort there, but a field in the deep, just a single. Another run over there. This time towards the backward point region for a single. Twelve on the board after 2 overs. That's a no ball. Horribly going wrong over there. Looking for the Yorker, but ended up bowling a high full toss. Way above the batter's head. That's a good strike. Just a single. Want to go back for the second. Throw was at the wrong end. They needed at the right end. If the throw was at the keeper's end, there could have been a wicket. So there is a announcement. Amul is distributing free lassi. You can go and get your lassi over there and enjoy the lassi. And there are 20% off on the products. Amul is providing you delicious lassi. You can go and have your lassi. And also giving good treatment to you, to the players. We have got Vellore Physiotherapy over here. Doing wonderful work. It's been a wonderful tournament. Title sponsor GSFC of this tournament. Thank you to everyone, all those sponsors, all those who have come in to support for this tournament. Thank you to them all. That's down the leg side, and these runs will all are giving a good support to the green toppers. 2 runs of wide over there. Yeah, head coach. After 3, score is 18 without loss. I think Jewels have really bowled well. They've kept the batters quiet. The only thing is the batters couldn't put too many runs on the board. If they would have had a score of 50-60, this game would have been very interesting to watch over there. The fight would have been very good.
I think they've kept the batters quiet in this small total of 37. Team in dark blue warming up. I think if you see this team, it looks like a rugby team. Hasn't got the connection. Underage, if lucky, that could have easily gone on the stumps. That's a white. Catch it is the call. That will be stopped over here by the fielder. The youngest fielder of this team standing at mid-off. जी हाँ, शर्मा जी सबसे युवा खिलाड़ी इस टीम के. ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी. देखना होगा अंपायर का क्या इशारा आता है. ये बाई का रन होंगे या फिर वाइड. 2 रन वाइड के और आ जाएंगे टोटल में. बढ़िया शॉट. डीप में फील्डर यहाँ पर कोई मौजूद नहीं. 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर. इसी चौकी के साथ स्कोर बढ़कर होता हुआ यहाँ पर 23. टीम की हेड कोच श्वेता रणनीतियां बनाती हुई खिलाड़ी के साथ. और पूरे खिलाड़ी नाराज है उनसे कि उनके हेड कोच ने चाय नहीं पिलाई पूरी टीम को अब तक. उम्मीद कर रहे थे कि वो चाय लेकर आएंगी. और खिलाड़ी अब मांग भी ये कर रहे हैं कि अगर हम चैंपियन बनेंगे तो आप हमें कहां लेकर जाएंगी. श्वेता यहाँ पर कह रही है कि आसपास में कहीं भटक लेंगे. बढ़िया शॉट. कवर्स के ऊपर से. अच्छा प्रयास. बेहतरीन एफर्ट. लगभग वो कैच हो ही गया था. और सूरज अगर आंख में नहीं आता तो ये कैच पकड़ लेते. टीम के रजनीकांत के नाम, इस खिलाड़ी को रजनीकांत के नाम से भी जाना जाता है. फुल टॉस गेंद ये थी. विकेट कीपर ने अच्छा कार्य किया नहीं. फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए. एक और अच्छा एफर्ट यहाँ देखने को मिला है. ओवर तो चौथा चल रहा है. 8 रन की दरकार और है भी. और इसी के 4 ओवर की समाप्ति में 36. 36 गेंदे 6 रन. Six more runs needed over here from 36 balls.
Makako Opal quickly get ready. ब्रेकिंग न्यूज आती हुई मकाको टीम से कि मनीष फिट नहीं है पूरी तरीके से. क्या वो मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये तो देखना होगा. डॉट बॉल. अच्छी फील्डिंग वहां पर. सिंगल मिलता हुआ. लगातार टीम के हेड कोच ओनर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा. Five needed just to finish this game. That's been played away into the offside for a single. Now they're thinking to go back for a second. This could be run out. Oh, it wasn't a flat throw. It was a balloon throw, which took ample time to come down. Our captain is getting quickly out in the middle. अगर आपको प्यास लगी है तो अमोल लस्सी प्रदान कर रहा है, जाके लस्सी पी लीजिए. और कोई भी खिलाड़ी को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर वेल्लोर फिजियोथेरेपी यहाँ पर मौजूद है. फिजियोज यहाँ मौजूद है, वो आप उनको अटेंड कर सकते हैं. इसके साथ विकेट गिरता हुआ. 3 रन की दरकार. पांचवा ओवर चलता हुआ. एक और विकेट गिर सकता है. जी हां, गिर गया. दूसरा झटका लगता हुआ ग्रीन टॉपर्स को. 2 in 2 from Aman Jain. Can he pick up a hat trick? 2 गेंदों में 2 विकेट. मौका है हैट्रिक का. विकेट तो ग्रीन टॉपर्स के गिर रहे हैं, लेकिन परेशान कोई और हो रहा है बाहर. Will this be a winning shot? No, just a single. 2 more needed. 1 for a tie, 2 for victory. With 30 balls left in the bag. With that, Green Toppers has won this game by 8 wickets. They advance to the next round. Time to resume the second innings of the second match. Makako will be taking the field.
131. A huge target to chase down over here for Topaz. Can they do it or not? Only time will tell. जी हाँ, चलिए ग्रीन टॉपर्स की शैंपेन तो पक्की हो गई। विवेक जी की तरफ से जो शैंपेन की घोषणा हुई थी, आइए आ जाओ बात। जी हाँ, ग्रीन टॉपर्स के कप्तान अनुज कहते हुए रिलैक्स करो। आई वुड रिक्वेस्ट $131 is the target over here for Topaz. Capital Blue Topaz, can they get over there? Who will start the proceedings over here for the Macaco Open?
well, or taking care that the players are fit and fine. जी हाँ, ये दृश्य को पूरी तरीके से ब्लॉक करती हुई ये टीम. मैं काफी देर से कमेंट कर चुका था, इसलिए नहीं चाहता था, क्योंकि सौरभ को ऑलरेडी 3 ग्रीन कार्ड मिल चुके हैं. चौथा मिल जाता तो मुकाबले में बैन लग जाता. No ball. Starting with the no ball. Time for a free hit. But I was surprised. Why did the batter ducked over there? He should have gone for the big shot. That was a free ball. He could have easily put that full toss away for a 6 or a 4. Single of a free hit. थोड़ा संभल के महेंद्र जी. Going for a quick single. Will get it easily over there. But they know the task is big. The required 100 is 13 runs per over. 6, 7, 8 runs per over will not do the job. Hitting it down the ground, but can't get past the mid-off fielder. Misfield. One man has already completed the run, the second. Up in the air and over the fielder standing at point for a double. अक्षत वार्म अप करते हुए ऑप्शन के बाहर, ये वाइड का इशारा. सिंगल्स पे दोनों बल्लेबाज बढ़िया तरीके से ध्यान देते हुए, और बीच बीच में जब भी खराब गेंद मिल रही है उसके ऊपर बड़ी हिट लगाने के प्रयास में. अतिरिक्त रन वो थोड़ा लगाम लगाना होगा. 130 रन बना लिए तो इसका ये नहीं कि मुकाबला जीत जाएंगे. जब से मकाको टीम ने ये घोषणा की है कि हम जीतने पे जर्मनी जाएंगे, दूसरी टीमें अलग अलग ऑप्शंस ढूंढती हुई.
After 1 over, score is 11. They've gone well over here in the run chase. Can they maintain this momentum which they've got in the first over? Thanks to those extras, that is why they got to 11. The asking rate is still about 13. कुंज अपनी टीम को छोड़कर दूसरी टीम में कुछ ना कुछ वार्तालाप करते हुए, और आलोक जी बड़े चालाकी से इस खेमे से इंफॉर्मेशन निकालते हुए, तो लगता है दूसरी टीम को साइन कर लिया उन्होंने। एक और वाइड आती हुई, इन अतिरिक्त रनों पे लगाम लगाना होगा। Too many wides. और इसी के साथ हिट विकेट होते हुए बल्लेबाज, फर्स्ट विकेट goes down, going too deep into the crease. ज्वेल्स की टीम कल ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। उनका एक और टूर्नामेंट वहां पर हिस्सा लेंगे वो। अशोक गुप्ता जी उनके कप्तान। वाइड का इशारा आता हुआ फायर का। That's well bowled, keeping it tight around and off stump. GSFC, the title sponsor of this tournament. Vellore has been providing the physiotherapy over here. All the physios are over here. They want to make sure that the players are fit and fine and enjoying the day. Oh, what a catch! One-handed! What a brilliant take this is! I think this man likes mangoes a lot. That's why he's taken that beauty. Superb catch over there, running back, putting his one hand out, and has plugged the mango from nowhere. Batter can't believe it. And he's saying, यार दोस्त तू तेरा छोड़ देता एक बार के लिए तो इतनी तो दोस्ती निभा देता। वो कह रहे हैं कि मैं भी क्या करूं यार भाई, मैंने कोशिश तो की थी कि छूट जाए, लेकिन वो तो एक हाथ में आ गया गेंद। वो कह रहे ऐसा कोई कैच पकड़ता है क्या? ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं माना जाएगा कैच। आई वो चलिए बैक टू द गेम। बेहतरीन कैच वहां पर। लवली टेक ओवर देयर, वन हैंडेड टेक ओवर देयर।
15 for 2. That's a good shot driven through the covers for 4 runs. Excellently timed over here through that covers for 4. After 2, score is 19 for 2. Next team, Awas, Ruby and Gem Experience, get ready. After the end of the 6th, though, we're going to have the toss. टॉस 6 ओवर की समाप्ति पे होंगे। अगर आपको बड़ी जल्दी है तो आप आपस में कर लें टॉस। कौन पहले बल्लेबाजी कर, हाँ, कौन पहले ओपनिंग करेगा, कौन वन डाउन कर जाएगा। यहाँ पर नो बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर का। आज जिस प्रकार से गेंदबाजों ने नो बॉल किए, क्या उनको विकेट कीपर में विश्वास है नहीं, या उनका टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो बेहतरीन विकेट कीपिंग कर पाएंगे या नहीं। दोनों विकेट कीपर को आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ी स्टंप्स के पीछे, चाहे वो टोपास के विकेट कीपर हो चाहे वो मकाको के। वाइट का इशारा आता हुआ फ्री हिट अभी भी जारी है। जयंत जो इस टीम का हिस्सा है वो बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन कुछ दिन पहले किसी न किसी तरीके से टीम के कप्तान ने उनको बनाया कि आप क्रिकेट खेलें। अब ये एक और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त रन काफी आते हुए इस मुकाबले में, चाहे पहली इनिंग की बात करें चाहे दूसरी। फ्री हिट, बढ़िया कैच, पर लेकिन विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि ये फ्री हिट थी। जश्न मना रहे थे वहां फील्डर, भूल गए थे कि ये फ्री हिट थी। कलाई का उपयोग किया, इसको खेला ऑन साइड पे। 2 रन की मांग कर रहे थे लेकिन दूसरा मिलेगा नहीं। No, wide ball from the umpire.
अक्षत पता नहीं घूर घूर के क्यों देख रहे थे मेरी तरफ, जबकि मैंने कोई कमेंट किया ही नहीं उनके ऊपर। पहले तो आप वार्म अप कर रहे थे, वो बता रहा था मैं आपके टीम के कोच को कि आप एक्टिव है टीम में। सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। 29, 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी 102 रन और बनाने हैं। रन के लिए जाते हुए डायरेक्ट हिट और विकेट मिलता हुआ। रन आउट होते हुए यहां पर अभिजीत, कप्तान ने कप्तान को किया रवाना यहां पर। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले के बाद 29, 3 विकेट के नुकसान पे। Single to the total will take it to 30. 100 Another wide. Today we have the birthday of King Kohli. We hope that he gets a big one today against South Africa in Kolkata.
He's missed out three centuries in this World Cup. He had a good chance against Australia, against New Zealand. With that, we're done with 4 overs. After 4, score is 33 for 3. Is that a wicket or is it off the shoulder? Seems it's off the shoulder. 34 for 3. Vellore is providing a fine service. Oh, the physio over here. You can attend them if you have any injury, muscle pulled up or feeling some pain in the body. Amol is providing lassi, free lassi to everyone. And on this Diwali festival, they're providing 20% off on their products. You can watch the action live on Jaipur Live over there. YouTube channel. Go to Jaipur Live and check this tournament. That's another wicket goes down.
34 for 4 after 5 overs. The required run rate is touching to 20 runs per over. Really difficult task over 98 to get from 30 balls. I would request Awas, Ruby and Gem, experienced captain, to get ready for the toss after this over. After this over, we're going to have the toss. Ruby taking on Gem. Both the teams' captain get ready for the toss. That's in the air. Fielder is there in the D, but that will land in between the two fielders. They'll go back for a second. That's a good shot. In the gap. Wants to go back for a second. Will complete that second one quite easily. Last ball of the over. That's been swept away. There's a fielder in the D, but that's going to be 4. We thought it, but brilliant effort there by the fielder. With that, we are done with 6 overs. After 6, score is 43 for 4. Time for the toss as Ruby take on Gem. Heads is the call, and it's come down as tail. Sort of what you'll do. Field first. And what's the reason behind fielding first? The reason is the net run rate, because the top two team will get to reach the finals. So we'll try as hard as possible to beat both the teams in the net run rate. Finals. What's the target you're looking to restrict the opposition? We are looking to second up for 50. The best for the game. So you wanted to bat first too? Yeah, we always wanted to bat first because we are very sure that we'll be in the final, so it doesn't matter for us. What's the score you're looking to put it? Triple digit? We'll be 100 plus. All the best for the game. And the news from the center is that it's Gem who has won the toss. They're going to be fielding first. Now Mike to Ajit, sir. Good morning, everyone. I hope you are enjoying the matches. And there's one small announcement. It is 10:15 now, and by 10:30, the breakfast will be wound up. So whosoever has not have his breakfast may please go inside the room and have his or her breakfast. After that, this Amul, this thing will be available, and then the caterer has to arrange for lunch. Thank you. Over to you.
Thank you. So the news from the center is that it's Gem who's won the toss. They're going to be fielding first. Both the captains looking positive at the toss. Both very excited to play the final. We're into the 7th over. It's 45 for 4. That's a good strike. Just for a single. Just dealing in singles because they know the only way they can win this game is by getting those big hits. And at the moment, those hits are not coming. Another over gets done over here after 7. Score is 48 for 4. Off the back foot, timing this one towards mid-off for a single. Women's also gearing up for their game. That's been played through that point region. They've got the protection in the knee, but will not be able to stop this one. 4 runs. .50 up with that boundary of Capital Blue Topaz. It's in the air for a while. Just a single. Another wicket goes down. Half the side is back in the hut. He's cleaned him up over there. Straight a ball into the stumps. After 7, score is 53 for. Indeed, 7.2 overs, 53 for 4.
अगला मुकाबला जेम्स बनाम रूबी। जेम्स की टीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। पूरी तरीके से तैयार है जेम्स की टीम में। उनकी टीम की ओनर कोच श्वेता बड़ी उत्साहित नजर आ रही है। हाँ, और दूसरी तरफ जब श्वेता थोड़ी सी दूर आई, खिलाड़ी ये चर्चा कर रहे हैं कहाँ चले घूमने के, टूर्नामेंट जीतते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। I would request प्लीज कमेंट्री बॉक्स से सामने से हट जाए। और उसी बीच कप्तान श्वेता कहते हुए कि गलता गेट चलेंगे घूमने। I would request every player not to throw the wrappers or everything on the ground. You can use the dustbins. मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि कचरा बॉटल्स ये ग्राउंड पे ना फेंकें, कृपया डस्टबिन में डिस्पोज करें वो सब। प्लीज ग्राउंड को मेंटेन रखें, क्लीनिनेस रखें ग्राउंड पे। थैंक यू। बाहरी किनारा यहाँ लगा है, फील्डर डीप में मौजूद है। क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी हाँ, दूसरे रन की मांग कर रहे हैं और दूसरा रन पूरा भी कर लेंगे। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट ओनर क्या है? जैसे ही बैक टू द गेम। जैसे ही राकेश जी खेमे में पहुंचे, बड़े खुश नजर आए खिलाड़ी। टीम को मोटिवेट करते हुए दोनों ही श्वेता और राकेश, और चाहते हैं कि उनकी टीम बेहतर प्रदर्शन करे। इसी की तरफ वापस खेल की तरफ रुख करते हैं। आफ्टर 9 overs, score is 63 for 5. I would request Gem team to get ready. One more over left to finish this game. 63. After 9, score is 63 for 5. Awas Ruby will be batting first over here. Captain Lokesh looked very confident with his boys. He said, we want to put on 100, 110 on the board. On the other hand, Saurav was also confident that he's going to restrict the opposition somewhere around 50, 60. Let's see who stands up with his words. Just a single. Another wicket going down. Jamie getting run out. It's been a fabulous performance over here from Makako.
They really dominated this game. Once again, a reminder to everyone, all those players out in the middle, do use dustbins to dispose water bottles, waste, wrappers. Don't dirty the ground. Make sure you keep the ground clean and neat. .65 for 6, 9.5 over the done. 3 more balls left. Captain Amit just setting the field. He's got the gloves on. Wide down the next side. That's a good strike. They've got the fielder in the deep. Nitin was there, but good work by mid-off fielder, making sure the batter only gets a couple. Aman keeping his eyes very closely on this game. And he's also keeping his eyes on that net run rate. That's been struck. Past mid-off, they'll come back for a second. Look at that reaction we could see from Aman. It was a bowler who couldn't collect the ball. And Aman was all frustrated to see that fielding effort. Last ball off for this match. It's going to be a big win over here. That will be run out. No, it will be just a single. So with that, over here, Makako Opal has won this game by 60 runs. What a fabulous performance from this team. Brilliant. Captain playing a captain's talk. He's led the troop well. The bowlers bowled well. And they won this game by 60 runs. I would request Gems team to quickly get in the field.
Match number 3 of GSFC GOI Premier League Season 2. It's going to be Abbas Ruby taking on Gem Experience. So Gem Experience won the toss, decided to bowl first. They're fielding it. First ball, there was a huge appeal for a caught behind. Denied by the umpire, no doubt. Good start from captain sort of over there. Will he be able to get that past that shot fine leg fielder? No, that's first one on the board over there for Ruby. In the air for a while, but in the gap. Point fielder doing it well with his foot. Single.
Off the back foot, wanted to run, but his partner doesn't respond for the run. That was definitely a run over there. It's been really going over here by the bowlers of Jim. They kept the things tight, not allowing the batters to score the runs easily. Fielder at mid-off, number 3. He's given some advice to the bowler. That's a good shot. Will the ball win the race? Yes, it will. 4 runs. First boundary of this innings, 10 on the board. We are into the second over. Another good shot. With that, we are done with 2 overs. After 2 scores, 12 without loss. Next match, Pearl will be taking on Silver Merc. Next match, it will be a women's game. Heavy sale of tickets for that match. That's a wide outside off stump. You have to control these extras.
That's a good strike down the ground, but just for a single. Akshat at long on does well. Just keeps the batter to a single. वेल्लोर की फौज यहाँ मौजूद है और ये फिजियो जो कोई भी इंजर्ड हो या फिर कोई इंजरी का इशू हो इनका आप इनसे आकर मिल सकते हैं पूरी तरीके से वेल्लोर की फौज तैयार है आपको दुरुस्त करने के लिए Oh, what a striker. This has gone for 6 runs. Low full toss. Put away by Vihan Chopra for a maximum. That's a big one. They needed these hits if they need to get to a good total. Gets back deep into the crease, but this time on few bounces towards the long on for a single. That's into the gap for 4 runs. This has been an expensive over. Not going well over here for the Gems, but going very well for the Rubies. Deepak now gets into the act. Put this one away for the 4. Back to back for over here. Deepak Khandelwal taking the charge now into his hand. After 3 scores, 30. 18 came of this one. Top 2 will play the final. Teams at 3rd and 4th will play for that 3rd position. And then there's an exhibition match of the women's. It's a straightaway final. हमारे स्कोरर के कंधों में दर्द है 11 साल पुराना दर्द है एक और बढ़िया शॉट पर अब की बार सीधा फील्डर के पास है 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर चौथा ओवर चलता हुआ पावर प्ले समाप्त हो चुका है 3 ओवर में 30 रन जोड़ चुकी है यहाँ पर आवास रूबी की टीम अगला मुकाबला पर्ल वर्सेस सिल्वर मर्क के बीच अक्षत पानी की मांग करते हुए अगर कोई अतिरिक्त खिलाड़ी है यहाँ पर जेम टीम का तो पानी पिला दें अपने खिलाड़ी को अक्षत को अगर जेम टीम का कोई अतिरिक्त खिलाड़ी तो पानी पिला दें अक्षत को बढ़िया शॉट गैप है 4 रन है
बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है यहाँ पर विहान और दीपक के द्वारा। शुरुआती 2 ओवर में खामोश नजर आए और लेकिन पिछले 2 ओवर से लगातार रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मौका क्या बन पाएगा, नहीं कैरी नहीं करी वहां फील्डर तक। दूसरे रन की मांग कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर होता हुआ 38। चौथा ओवर चलता हुआ। एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली है। विहान चोपड़ा 22 पर बल्लेबाजी 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपक खंडेलवाल 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट अब तक बढ़िया रहा है। एक रन मिल जाएगा। इसी के साथ 4 ओवर समाप्त। 4 के बाद 40 बिना किसी नुकसान। रमेश ग्राउंड्समैन से मैं विनती करूंगा कि एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। ग्राउंड इंचार्ज रमेश जहां कहीं भी हैं आप एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अमित आपको याद फरमाते हुए। बेहतरीन शॉट यहां पर इस बीच। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अक्षत कोठारी अपना दूसरा ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर करारा प्रहार दीपक के द्वारा। ये यहाँ पर अंपायर का इशारा क्या होता है देखना होगा। अच्छी फील्डिंग टीम में। बढ़िया अंदाज में वहां गोविंद को रोका। कहीं ना कहीं गेंद डीप हो रही थी, इसके चलते अंपायर का इशारा नहीं आया नो बॉल का। ऊंची है गेंद, फील्डर नीचे है और बल्लेबाज डग आउट में है। पहला झटका लगता हुआ यहां पर आवाज रूबी को। विहान चोपड़ा वापस लौटेंगे। Next match, Pearl versus Silvermurk. Both the captains get ready for the toss. I would request our guest of honor to be present for the toss. Rajiv Dasot sir and Ajit Saxena sir to do the toss. Team captain Silvermurk, team captain Pearl platoon. Please come here for toss.
Team captain per platoon, team captain Silver Mac. Galaxy taking on Pearl Platoon. Hello, I would request Mrs. Leena Dasot, Vice President RWA, and Mr. Rajiv Dasot जी, Chairman समस्या समाधान शिविर. Please come here. ये टॉस कराना है सर आप दोनों को. Captain, both the captains. Amit, coin is needed. नहीं वो coin तो मिल गया. Camera. सारे players. आ जाइए प्लेयर्स आ जाइए सारे. लेट इट बी अ कलरफुल टॉस, अ ग्लैमरस टॉस. हाँ सामने कैमरा है और टॉस का वक्त है. राजीव सर सी बना अरे ले. नहीं आप उछालो ना. एक सीधी लाइन में खड़ी हो जाए ना पहले दोनों आप ball टीमें. करवा दो. अपने हाथ में छुपा लो एक हाथ में. दोनों कैप्टन्स, बोथ द कैप्टन्स कम हियर प्लीज. अब आप दोनों मुट्ठी आगे कर दीजिए सर. नहीं ये सर आप आगे करिए. बताइए किसमें, आप बोलो श्वेता किसमें है कॉइन. वो कॉल लेगा. खोलिए सर. हाँ कॉल आपकी है, आप सिक्का उछालिए. अब लीना जी सिक्का उछालते हुए दोनों कैप्टन सामने सामने. And it's head. Shweta wins the toss. Thank you, Leena ji. Thank you, Rajiv sir. Please. चलिए. So, team Pearl platoon won the. So team Silver Mac won the toss and decided to field first. Thank you very much, Amit. That's a good shot, but straight to the fielder. सिल्वर मर्क ने जीता है टॉस और पहले गेंदबाजी करने का किया है फैसला. जेम्स की टीम नजर आए, सॉरी पर्ल की टीम नजर आएगी बल्लेबाजी करते हुए. Straight to that fielder just for a single. There's a fielder in the deep. Will he be able to stop this one? No, it's going to be 4 runs. Runs are coming. Every over they're getting the boundaries which they needed. 60 with that 4. We are into the 6th over. They're looking to score somewhere around 110. Sort of has to come back hard with his bowlers. That's a slower delivery. He's missed it completely. 6 overs are done. After 6 score is 60 for 1. मैं आप सबसे विनती करूंगा कि बॉटल्स ग्राउंड पे ना फेंके, डस्टबिन यूज करें प्लीज. I would request not to throw the bottles on the ground. There are dustbins placed around you. You can use them please. अमोल की लस्सी का लीजिए आनंद. और अगर आप हैं चोटिल तो वेल्लोर के फिजियो से आए और मिले. धाकड़ इनकी टीम आपको अनफिट से कर देंगे फिट, फिर आप खेल में दिखाएंगे आपके जौहर. सिंगल मिल जाएगा यहां पर. 7वां ओवर प्रगति पे.
Wide signal from the umpire. Down the leg side, wide. मुझे चंदू मेरे स्कोरर सवाल पूछते हुए कि जब फिजियो प्रीमियर लीग होती है तो ये फिजियो कौन ट्रीटमेंट देता होगा उस समय, क्योंकि ये सारे मैदान में होते हैं, क्या ये खुद ही अपना इलाज कर लेते चलते मैच में? इस भी अच्छी गेंद यहाँ पर। 7वां ओवर यहाँ पर चल रहा है, बढ़िया स्कोर यहाँ पर लग चुका है रूबी के लिए। अब्बास रूबी मिसफील्ड दबाव बनाया था फील्डर के ऊपर, वो दूसरा रन तेजी से पूरा करने गए, जिसके चलते मिसफील्ड के चलते 4 रन मिले। Seven overs are done. After 7 overs, score is 70. They're going at 10 runs per over. Looking very good, solid in the approach. Both the batters have looked positive out in the middle. GSFC, title sponsor. Thank to supportive sponsors Amul, Vellore for coming and doing a wonderful job. Just outside off stump, that's a wide. Hit over in progress. I think someone has got the power of using that undo button. लगातार उस का इस्तेमाल करते हुए they're going to go back for a second. Really, the fielding has not been up to the mark over there. Mohit Parnami batting on 12 from 8 balls, striking of 150. On the other hand, his partner Deepak Khandelwal batting on 29 from 21 balls, striking of 138. That's in the air. Aman got there but couldn't complete the catch.
That's a good strike for 6 runs. Good batting. Runs, runs and runs. Lot of runs. With that, Tato was a done. Score is 83 for 1. मुकाबले के दृश्य अपनी तीसरी आंख में कैप्चर करते हुए हमारे कैमरामैन नेक्स्ट नंबर ये गेंद है, फाइन लेग में फील्डर मौजूद है, 2 रन की मांग करते हुए बल्लेबाज आसानी से पूरा भी करेंगे। एक रन शॉट का इशारा आता हुआ अंपायर का, मेहनत की वो 2 रन पूरे करने पर, लेकिन 1 रन शॉट होता हुआ यहाँ पर। Ninth over in progress, 87 for 1. Mohit batting on 22. Deepak Khandelwal batting on 33. Down the leg side, has he got some connection? No, it's been signaled wide. 2 runs of a wide added to the total. Aman Mantri bowling his second over, is conceded 16 runs. 15 runs. He's going at 9 runs per over. Just playing it towards that fine leg for a single. That's good running. Good running between the wickets by both the batters. The moment he played the shot, he was off the blocks quickly. 9 overs are done. Score is 93 for 1.
Last over of this innings. I would request the groundsman quickly to get the ground ready, because after this we're going to have the women's game. नरेंद्र जी जो कैटरिंग से हैं, एक बार आप या फिर आपके किसी स्टाफ को एक बार कमेंट्री बॉक्स में भेजें. नरेंद्र जी जो इस बीच गेंद को खेलते हुए फाइन लेग पर स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए दूसरा रन लेना चाहते थे, पर लेकिन मिलेगा नहीं दूसरा रन. थैंक यू अजीत सर. विकेट कीपर ने लपक लिया ये कैच, और इसी के साथ एक झटका लगता हुआ यहाँ पर बड़ी देर के बाद ये विकेट आया, लेकिन स्कोर बोर्ड पर बढ़िया स्कोर लगा चुकी है ब्रावास रूबी की टीम. हम इंतजार कर रहे हैं कि किससे वो फाइनल खेलेंगे. क्या वो ग्रीन टॉपर्स, जिस तरीके का उनका नाम है उसी तरीके से टॉप करती हुई ग्रुप को बड़े खुश नजर आ रहे हैं. अनुज अब ये भी बता रहे थे कि अगर वो टीम चैंपियन बनी तो स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे. और इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर GSFC का धन्यवाद करते हुए हम, और GSFC के तरफ से हमारे बीच विवेक जी और पनम जी मौजूद है. आपका धन्यवाद कि आप आए हौसला बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का. एम्बुलेंस की सेवा यहाँ पर रोंगटा हॉस्पिटल देती हुई और खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए वेल्लोर फिजियो क्लिनिक यहाँ पर मौजूद है. उनके फिजियोज यहाँ मौजूद है, बढ़िया कार्य करते हुए, अमूल लस्सी पिलाते हुए इस गर्मी में सबको. मौका रन आउट का मौका, बस मौका ही रह गया. अब जरूर मौका है यहाँ पर, डायरेक्ट हिट लग जाएगी, विकेट मिल जाएगी. नहीं, रन पूरा कर लिया, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच. और इसी के साथ ये पारी हुई समाप्त. ग्राउंड्स और 96 रन बनाए, 10 ओवर में 97 का मिला लक्ष्य. मैं ग्राउंड स्टाफ से विनती करूंगा जल्द से जल्द मैदान तैयार करें वुमेन्स की गेम के लिए. थैंक यू. Thanks to our title sponsor GSFC, supportive sponsors Velour, Amol Cool and Roongta Hospital. Thank you very much. वेल्लोर के फिजियो धाकड़ टीम, इनकी पूरी फौज तैयार है.
जिस किसी को भी इंजरी हो रही हो या कोई दिक्कत हो रही हो, आप आए फिजियो से मिलें।
नरेंद्र जी कैटरर या उनका कोई स्टाफ हो तो एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज, आपसे विनती है नरेंद्र जी। वुमेन्स का ये मुकाबला, एक तरफ पर्ल की टीम है तो दूसरी तरफ सिल्वर मर्क। टॉस जीता था सिल्वर मर्क ने और पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। पर्ल की टीम से पारी की शुरुआत करने यहां पर जाती हुई ये बड़ी गहरी डिस्कशन करते हुए रणनीतियां बनती हुई। दिल की धड़कनें ग्रीन टॉपर्स की भी बढ़ती हुई, क्या वो सेकंड पे रहेंगे या थर्ड पे जाएंगे। दूसरी तरफ लोकेश जी की टीम रूबी, क्या वो दूसरे पायदान पे आएंगी या वो चौथे पे रहेंगे, या फिर जेम की टीम दूसरे पे आएंगे या चौथे पे रहेंगे। रौनक खंडेल कुमावत भूल गया जी, बिल्कुल। चलिए मुकाबला शुरू होता हुआ, पहली गेंद हवा में है, कौन सी वो फील्डर होगी जो उड़ती हुई नजर आएगी। किसी ने प्रयास नहीं किया। एक बार मेरे सामने से हट जाएं, आप सबसे विनती है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, हमने देख लिया। क्या ये पहला रन होगा बल्ले से? जी हां, एक अच्छा शॉट, लेकिन रन मिलेगा नहीं यहां पर। आज बहुत तेज गेंदबाजी की अक्षत ने, जिसके चलते हल्के से खिंचाव महसूस कर। काश ये कमेंट्री बॉक्स हवा में होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इस हर कोई कमेंट्री बॉक्स के अंदर सामने आकर खड़े हो गए हैं। आपसे विनती है तो कृपया सामने से हट जाएं। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखते हुए, और इसी बीच एक पूरा होता हुआ प्रिया और मनुश्री पारी की शुरुआत कर रही हैं, और प्रज्ञा गेंदबाजी की शुरुआत करती है अपने टीम के लिए। एक ओवर की समाप्ति पे 3 बिना किसी नुकसान के। ओके चलिए, प्रिया नहीं है, रिया चोपड़ा पारी की शुरुआत कर रही है यहाँ पर मनुश्री के साथ। गेंद हवा में है,
और ये पकड़ लिया गया कैच, पहला झटका लगता हुआ यहां पर, बढ़िया कैच, स्क्वायर लेग पर दौड़ कर गई और इस कैच को पूरा करते हुए वहां पर जश्न मनाते हुए वहां पर खिलाड़ी, पर्ल को पहला झटका लगता हुआ। थैंक यू रवि जी। जी बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है और आप सीधा प्रसारण आप जयपुर लाइव पे देख सकते हैं। ज्वेल की टीम कल ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। एग्जीबिशन मैच यहाँ पर वुमेन्स का चलता हुआ। टाइटल स्पॉन्सर GSFC, सपोर्टिव स्पॉन्सर अमोल कूल, वेल और क्लिनिक, रुंगटा हॉस्पिटल। मकाको की टीम चैंपियन बनने पर वो पूरी आशा रख रहे हैं कि जैसे भारत विश्व कप जीतेगी उनके साथ प्रदर्शनी मुकाबला खेलेगी। मनीष उसकी पूरी प्रयास में लगे हैं कि BCCI से बात करें जय शाह से और मुकाबला रखा जाए, चैरिटी मैच। जी हाँ, बड़े चालाक स्कोरर है हमारे। प्रिया में से पी को उड़ा दिया और वह नाम को पूरी तरीके से सही करते हुए अमित बल्लेबाजी टीम के कोच, इनको टीम का कोच बनने के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए टीम के ओनर के द्वारा। सबसे महंगे कोच इन दोनों टीमों में से। नए अवैध नए बल्लेबाज क्रीज पे बल्लेबाजी करने आई हैं। प्रिया चोपड़ा स्ट्राइक पर होंगी, 1 रन लेकर अपना खाता खोलती हुई वहां पर नेहा। ये गेंद हवा में है, फील्ड डी पे मौजूद है, उन हाथ लगा नहीं, प्रयास अच्छा था। और यहाँ पर GOI कमेटी का धन्यवाद करना होगा। अंपायर्स कह रहे थे कि आज लगता है कि पहली बार क्रिकेट इतिहास में ऐसा होगा कि वो लंच अंदर ही खड़े खड़े करेंगे। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ ऐसा हमें लगा, पर लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं एक बार गेंद बल्लेबाज के पैड को टकरा कर जाती हुई। इसी के साथ 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 4 एक विकेट के नुकसान पे। Two overs are done. Score is 4 for 1. इस बीच 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज दूसरे की मांग करती हुई यहाँ पर, और दूसरा भी पूरा कर लिया। अच्छी एनर्जी नजर आ रही है दोनों टीमों में।
लोकेश जी अमित के पास जाते हुए लगता कुछ ना कुछ रणनीति बना रहे हैं। दिशा से भटकती हुई गेंदबाज, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। तीसरा ओवर, आखिरी ओवर पावर प्ले का चलता हुआ यहाँ पर। अच्छी दौड़ ये दोनों बल्लेबाज लगाती हुई विकेटों के बीच। We are into the third over. It's 11 on the board with a loss of 1 wicket. Good delivery. Too early into the shot. Not making any connection over there. That's been in the end taken. Another wicket goes down. Nia is back in the hut. Just 11 on the board. They've lost their second wicket. Now Priya going out in the middle to bat. New batter, Priya. She's played one game before that. Her highest score is 7 runs. Last season, she played this game. It's been a long wait of 1 year to play this game again. First ball looking to go big, doesn't get any contact. Riya Chopra, 5 of 8 balls. Play and a miss. Team's captain Shweta. That's a good shot, but straight to the bowler. Four overs are done. Score is 13 for 2. Thanks to our title sponsor, GSFC. Supportive sponsor, Amul Cool, Vellore Clinic and Roongta Hospital. Thanks to Rahul Sharma who's taking care of yoga, stretching of the team.
Mohit is getting warm up because he knows after this he has to go out in the middle and bowl, take a wicket. Seems that they have called Riya Chopra out and they've sent someone in who's next batter making her way out in the middle. Riya has made over back. She got 5 of 8 balls. 6 more overs to go. Just 13 on the board. Last over was good from Captain Shweta. Roshni. Looks like they've changed it. They go back to Kushamina. That's in the air. And taken. Third one is back in the hut. 3 good catches we have seen over here. Priya is making a long walk back to the dugout. Thirteen for 3. Chance of run out and she misses over there. That was a chance of run out. Not too many runs have come over here. That's in the air again, but it's far away from the fielder. A lot of fielders on the onside. Wants to go back for a second and will complete it easily. It's a directed, but she'll not get the result. The batter was well home.
5 overs completed over here. After 5, score is 17 for 3. Oh, square leg umpire could have done better. He just saved 2 runs for the fielding side over there. Now they'll go back for the third one. They could go back for the fourth one. That's a good running, excellent running. 4 runs they've completed over here. Superb running between the wickets. The umpire just checking with the fielder. Is that a 4 runs of an overthrow, or is it just in the play? 4 runs they ran over there. Good running between the wickets. Well, seems like the umpire just confirmed with the fielder that's overthrow for 4, so it's a 6 runs in all. 6 runs of that one, the last ball. The throw came in when they were about to complete the second run, and the ball raced away towards the ropes. So it's 6 runs of the last ball. And with that, score has now moved on to 23. Wanted to put this one away towards that fine leg region. Couldn't get any connection over there. No full toss. Fielder in the deep. She can't stop this one. 4 runs. They needed these runs. Trying to stop with the foot, but couldn't get the foot to the ball. Oh, after a long time, we are seeing smile on the face of Amit. He was worried because runs were not coming. Trying to sweep that away for a 4, but she couldn't get a connection over there. With that, it's the end of the over. After 6, score is 10 came of the last over, 27 for 3. ये गेंद ऊंची है, फील्डर उसके नीचे पहुंच नहीं पाए और रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। धीरे धीरे रन बनते हुए अब जो पहले 5 ओवर में रन आए नहीं थे, अब वो रन आते हुए दोनों बल्लेबाज इसी प्रयास में कि वो बड़ी हिट्स लगाए जाए, चौके बटोरे जाए। पिछला ओवर बढ़िया गुजरा वहाँ पर्ल के लिए, जहाँ पर उन्होंने 10 रन निकाले उस ओवर से। इस ओवर को ही बड़ा बनाना चाहेगी दोनों बल्लेबाज। एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर।
एक और विकेट, पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ. She is on a hat trick now. Can she pick up a hat trick? Palak will be the new batter, going out in the middle to face the hat trick ball. She wasn't expecting that. She'll be going so early to bat. Half of the side is back. A golden duck. Rani is requesting the umpire. I did not nick it. Umpire saying there was edge. The umpire's got the eagle's eye. She went with a lot of excitement to go out in the middle, to play, to get some big shots, but got out. First ball. Hat-trick ball. It's a wide down the leg side, so hat-trick is on. Will she able to pick up a hat-trick? She denies the hat-trick. With that, she also completes a single. Getting off the mark straight over the single over there. That was in the air for a while. A run completed there easily. They're going to go back for a second chance of run out. She completes a run quite easily over there. Good running between the wickets. Sachi and Palak. Nanisha bowling her last over. Now she drinks. Amit, I would request to send some water to the umpires, and the players also need water. अमित अगर आप सुन पा रहे हैं तो खिलाड़ियों को और अंपायर्स को पानी चाहिए अंदर. सामने से हट जाए एक बार प्लीज, आपसे विनती है. सौरभ, अनुज, आप सभी से विनती है प्लीज साइड में हो जाए थोड़ा. So after 7, score is 34 with the loss of 5 wickets. Thank you very much. Eighth over in progress, 35 on the board. Both the batters looking good. Palak and Sachi. Sachi has been doing a lot of scoring out in the middle. Trying to set the field, not sure about that field. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fielders on the onside. That's down the leg side. Wide signal.
I've been surprised with the amount of fielders inside. 7 on the onside, 3 on the offside. It's really surprising to see that. That's been put away to the onside for a single. So with that, 8 overs are done. After 8 overs, score is 39. 2 more overs to go, 12 ball left. They'll definitely be looking to add 12 more runs. Twelve balls left. Now 4 on the offside, 6 on the onside. Trying to go big, hasn't got that timing over there. No full toss. Half stopped. Yes, no was the confusion. That's a misfield. Will they go back for a second? No, only sticks to a 1 run. Could have put in a better effort to stop that one. That should have been stopped over there. That's in the air. Fielder will not get there over there. Just a single. This is the 4th game of the tournament. After this, we're going to see the second innings of the 3rd game, where Awas Ruby batted first, posted 96 on the board. Gem Experience need that 97 runs. Trying to go through that offside, doesn't get the contact over there. That's end of the over after 9. Score is 41. One important announcement, lunch is ready. So whosoever wants to have lunch can enjoy the chole bhature, pav bhaji and jalebi. Once again I would repeat, lunch is ready. Whosoever wants to have lunch can go for lunch and enjoy chole bhature, pav bhaji and jalebi. Thank you. Thank you, sir. ग्रीन टॉपर्स की टीम यही चाहिए जो अगली पारी बची है वो बराबर का मुकाबला हो, तो उसके चलते वो दूसरे पायदान पे रहेंगे.
Going back for a second. And well, she gets back on time. Good running. Want to drag this one towards the onside. It's been called wide from the umpire. That's 4 runs. With that 4, they have moved on to 47. Few more runs and they'll get 50 on the board. That will be a good total. Run out chance, missed over here. Good running over there between the wickets. That's a dot ball. Going for a run, directed. Will this be a run out? Is she got her? Yes, she has. Rekha is a new batter. One ball is left over here. Can she hit this one ball to Seema Rekha? रेखा के पास पूरा अवसर है कि गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचाए. थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं अमित स्कोर को देखकर. आखिरी गेंद. अच्छी फील्डिंग. डायरेक्टेड नहीं, यहाँ पर रन पूरा हुआ है. देखना होगा, रन पूरा हो गया. यहाँ पर डाइव लगा है आखिरी समय में. उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा चोट आई ना हो. इसी के साथ 10 ओवर में पर्ल की टीम ने बनाए हैं 49-50 रन का लक्ष्य दिया है. यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ 51 रन का लक्ष्य मिला है सिल्वर मर्क को. अब देखना होगा यहाँ पर रूबी की टीम जल्द से जल्द फील्ड में पहुंचे. और उससे पहले ग्राउंड्समैन से विनती है कि ये कोन हटा दे. ग्राउंड्समैन कोन हटा दे प्लीज.
Going for a quick single, will get that easily. That's a good shot. This will get to the fence or not? No, it will be cut off. 2 runs completed over there. Three came of the first over this over. 2 down the leg side wide. Abhinav has conceded 4 runs from his 2 balls till now. That's well done by the bowler. Akshat Kothari batting on 2 from 5. Saran, his partner at the other end. If they have to come to the second position, they have to chase down this total somewhere within 7 overs. Going for that big heave, doesn't get the connection. Now they'll get a run off a bye. Another good over. Just a ball left in the over. They'll get a run off a leg by. Looking to go big. Another play and a miss. This is what we saw in the last over. And this is what we're seeing in this over. And he's cleaned him up. A wicket goes down over here.
boundary. That's what they needed. Some hits to win this encounter. Three overs are done. Score is 14 for 1. Easy single over there towards the final leg region. That's a good shot. But it's straight to that fielder. Will they look to go back for the second? Only single. They need a lot of big hits if they want to win this one. It has to come from someone. Someone has to take the responsibility of getting those big hits. The Ruby bowlers really bowling well, keeping the things tight, not giving the batters easy to bowl. That's been pulled away, but straight to that man in the deep towards backward square leg. These singles will not help the cause of getting the total which they're looking to get. That's called wide down the leg side. Now wide outside off stump. Started down the leg side, now it's ball outside off stump. Another one down the leg side. Hat-trick of wides over there. This will definitely help the cause in getting to that total. That's been pulled away, but straight to that man in the deep. They've played good shot, these two batters, but not able to put them away in the gap. Four runs. Good shot over there. Finally he's found the gap. Was heading to the fielders and finally found the fence. वेल फ्रेंड्स, गरम जलेबी, भटूरा और पाव भाजी आप लोगों का इंतजार कर रही है और इस वक्त भीड़ भी नहीं है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लंच ले लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. थैंक यू. Down the leg side, another dot ball. I would request आप सबसे विनती है कि बॉटल्स बाहर ना फेंके मैदान में प्लीज.
अब रैपर्स ग्राउंड पे ना फेंके, प्लीज यूज द डस्टबिन, इट्स अ रिक्वेस्ट. Fielded well in the deep, wants to go back for a second but will only settle for a single. Could have put in that effort to go back for a second. ग्रीन टॉपर्स के कप्तान अनुज कुछ ना कुछ रणनीतियां बना रहे हैं कि अमित को कैसे आउट करना है अगर फाइनल खेलते हैं उनसे. Four overs are done. Score is 28 on the board. Dot ball. Now these two batters have to get into the act. They've taken ample time. Coming down the track, going for a big heave. It's a dot ball. Because of that required run rate, the pressure is getting onto the batter. They're looking for those big hits. But not covering the line, they're not getting to the pitch of the ball. Just playing it away from far of that ball over there. श्वेता टीम की ओनर कोच बड़ी परेशान नजर आ रही है. सिंगल मिल जाएगा यहां पर. अनुज कुछ ना कुछ रणनीतियां बनाने जेम्स के खेमे में गए हैं. अब क्या रणनीतियां बना रहे हैं, लगता कहीं ना कहीं चर्चा ये कर रहे हैं कि अगर ग्रुप में टॉप नहीं करेंगे, फाइनल नहीं खेलेंगे, क्यों ना इमीडिएटली एक और सीजन स्टार्ट कर दिया जाए. टीम के कोच अकेली यहां पर खिलाड़ी गायब. बिल्कुल एनर्जी नजर नहीं आ रही इस टीम में, सिर्फ कोच को छोड़ दिया जाए तो. वाइड का इशारा पैर का, लगता है वो खाने की घोषणा गलत टाइम पे होगी. एक और वाइड. ये अतिरिक्त रन मदद तो कर रहे हैं पर लेकिन फिर बल्लेबाजों को भी बल्ले से रन बनाने होंगे. बड़ी देर बाद गेंद बल्ले पर चढ़ी है सरल के. आज काफी सरल नजर आई है इनकी बल्लेबाजी. मोहित को काफी विश्वास अपने गेंदबाज के ऊपर. वाइड का इशारा आता हुआ पार का. बड़ा हिट लगाने गए लेकिन वहां पर फिर से संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले से. अंदरूनी किनारा लगा, जैसा वो चाहते थे वैसा संपर्क हुआ नहीं. इसी के साथ 5 ओवर समाप्त. 5 के बाद 35, 1 विकेट के नुकसान पे. रौनक अपने डोले शोले बनाते हुए
30 गेंदों का खेल बचा है। इन 30 गेंदों में 62 रनों की दरकार है। यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर निकाल के लाए ये टीम के कोच इन खिलाड़ियों को। कहाँ छुप गए थे जेम्स के खिलाड़ी। रन चाहिए स्कोरबोर्ड पे। बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर को वहां बीट नहीं कर पाएंगे। अब तक बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली आवाज रूबी के द्वारा, चाहे बल्लेबाजी की बात करें चाहे गेंदबाजी की। और अच्छी दौड़ विकेटों के बीच 1 को 2 में तब्दील किया। डॉट बॉल। Runs not coming the way Gems wanted. That's wide outside off stump. Gem experience, using the experience to win this game. But at the moment, it's not gone their way. I think they're trying to distract Mohit over there. That's why they've gone straight over there at long on where Mohit is fielding. That's going to be 4 runs. Good shot. With that, score moves on to 39. Add up 4 more runs to the total. Score is 43 now. 54 needed of 26 balls. Down the leg side, that's a wide. Could have attempted for a big shot of that low full toss. Could have gone for a 6 or a 4. Now he's coming over the wicket, sort of Agarwal. Will he find the man in the deep? It will just be a single. Subtle with that single has moved on to 16 of 17 balls. A third ball to finish the over after 6. Score is double 4. The loss of 1 wicket. Six overs are done. It's 45 for 1. "24 balls, 52 needed. It's 13 runs per over. From where the runs will come. Young left arm spinner. Starts with a wide down the leg side. Is that in the gap, straight to the fielder. They've got so many balls on the leg stump, but they hardly put away for 4 or 6. So many loose balls, but couldn't put them away. Good captaincy, got the field on the onside.
catch it towards a shout. Catch went down, but Mohit is there and log on. After half an hour of discussion with Mohit, Mohit still fielded that ball. That's a good shot. That's in the air. That's in the cap. Has this gone all the way? Yes, it has. 6 runs. It's come after a long time. Now with 1, they won't be satisfied. They need 2, 3, 4. These big hits to win this game now. With that 6, Saral moves on to 23. Double Sweta, just cheering Saral. Let's see what he can do it. Yes, it's a double. Shweta. That's a dot ball. That's gone for 4 runs. 1 bounce into the fence for 4. $58 for 1. डीजे वाले बाबू न्यूजीलैंड चले गए. And that's going to be 4 more, 2 to finish the over. 62 after 7. Now they need a 13-5 of 18. It's close to 12 runs per over. Seven overs are done. Score is 62 for 1. All of a sudden, the crowd has just got close to the boundary rope. I just got to know that the season 3 of this tournament will be played in New Zealand. That's in the air, will be taken, and a wicket goes down. That's a good catch running back. Amit just told me that season 3 will be held in New Zealand. So everyone get their passport ready. Amit, can I have you over here, please?
That's in the air. There is a protection in the deep. Now they're thinking to go back for a second. Only will settle for a single now. I would request all these players standing in front of commentary box, can you please get a sight? Thank you. Subtle going for a big one. He gets an outside edge into the wicketkeeper's glove. Another wicket goes down. Aditya, the big man, the big show. Can he get those big hits? It's just been a good bowling over here by our Ruby bowlers. They've kept the things tight. They've not allowed the batters to score that freely. Yes, last over runs did came. But overall, if you see, they've kept the batters most of the time quiet. 15 balls left. And now, 14 balls left. 34 needed. First ball striking it down the ground for a single. And what's happened over there? 3. Oh, there was definitely a chance of getting run out. They could have easily run out Aditya over there, because he was outside the crease, he was running with the runner. That's in the air, that's gone miles in the air. No one will get there. A couple. जैम एक्सपीरियंस टीम के साथ में श्वेता जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे. श्वेता जी, श्वेता गोगरू जी, जैम एक्सपीरियंस. यस, टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी टीम कैसी परफॉर्म? My team is superb, no doubt. Winning and losing the matches doesn't matter, but जो spirit है, that's amazing. And I hope next year भी यही team हो मुझे. चलो, तो जैम एक्सपीरियंस वालों, आपकी पार्टी पक्की हो गई है. जी हाँ अमित, पर लेकिन नेक्स्ट ईयर न्यूजीलैंड में होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पूछता हूँ श्वेता जी. श्वेता जी, तो इस नेक्स्ट ईयर का जो मैच है, कमेंटेटर बता रहे हैं न्यूजीलैंड में है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या प्लान कर रहे हैं? अभी वीजा लेने जाएंगे, मिल जाएगा देन सोचेंगे. ये देखो, इस पे ग्रीन टॉपर के कैप्टन, इसमें मुझे एक दो एक्सचेंज करने पड़े. आई थिंक ऑन इट. ग्रीन टॉपर के कैप्टन से हम बात करेंगे. यहाँ पे अनुज बंसल यहाँ पे हैं. आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? अपनी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है? टीम हमारी बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है, और हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बहुत तालियां. इस बार तुमने बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया, और इस चक्कर में हमको बहुत फन आया. और फ्यूचर ऑर्गेनाइजर्स हमारे हो, और आगे से जो ऑर्गेनाइजर्स है ये खेलेंगे नहीं, खेलेंगे दूसरे लोग ही. और ऑक्शन में भी नहीं आएंगे. कैमरामैन, इस चीज को रिकॉर्ड में मत लेना प्लीज. हमको ये पता पड़ चुका है, फाइनल में आ गए हैं. तो आप ये कहना चाहते हैं कि अनुज कुछ खिलाड़ी ट्रेड करेंगे जेम की टीम में? सर, इस पे हम बात करेंगे. हम जब तक चलते हैं आवास रूबी के यहाँ पे. Twelve balls, 31 needed. Green toppers are looking very happy and excited. That's in the air. That's in the air. In the air. Oh! Taken by the youngster. 11 balls. Now with that wicket, it's 10 balls left. 29 needed.
It's 9 balls left, 29 needed. Down the leg side, now 9 balls, 28 needed. That's going to be another wide. 2 wides in a row. 9 balls, 27. It's still possible, but they have to get those big hits. Another wide. Hat-trick of wides. 26 of 9. A wicket goes down. Was this the plan by the bowler? By bowling 3 wides and then picking a wicket. Eight balls, 26 needed. So let's take an opinion from the Silver Galaxy's team captain Shweta Goyal. Now we're gonna hit the boundaries also. That's the strategy. So your team has decided to finish the game by hitting boundaries only, no single doubles. Both are important. We'll see on the ground how the ball comes and we will decide like that. So let's have a round of applause for Team Shweta. They have decided to win this match with a positive note. That was a good shot. He put away for 4. First ball. 7 balls, 22 needed. This is another good strike. Is this in the gap? No, it's straight to the fielder. Just a single. 6 balls, 21 needed. Some big hits here and there. And you could see the gem winning this one. Who's going to be the one who's going to bowl the last over? Will they go to Mohit? 6 balls, 21 needed. Pearl team, get ready for your fielding. Amit, how excited you are to play the final? So I am here with the captain of Team Pearl platoon here. She's Priya Abhichandani ji. So now we have heard about the team Silver Galaxy. They have decided to win this game. So what is your strategies about against them? Well, 2 teams cannot win, so we also have a same ambition to win this game. The strategies, we are not to tell there here. We will show you there. We will play the strategies. We won't say it out. So here's the Team Pearl platoon. Cheers team. So Priya ji, how about the past 20 days after the auction when you got your team? कैसे क्या प्रैक्टिस सेशंस रहे हैं, कैसे क्या ये 15-20 डेज आपने मैनेज किया है सब चीज़ों को? We have been trying to practice every morning and evening. In fact, my team waits for my good morning in the morning at 6 a.m. So let's see tomorrow how does it happen. But we all we'll feel a void tomorrow and coming days that cricket is not there in our life after this. But let's try to do it still after this match. So on behalf of your team, do you wish to have these kind of tournaments again and again? Of course, we would love to have these tournaments again, and we should have these friendly matches quite often. I mean, it'll keep us all in sports spirit, and this is what I want. Everybody is so, I mean, look at the sportsmanship over there. So Amit, you can book every Sunday for them. Yeah. We should have a pitch actually to play, to practice. So thank you so much, Priya ji. Thank you so much for the spirit. Here we go. Thank you. So now the next team. Just few more balls left to finish this game now. So meanwhile,
1 ball left, and now they need 17. That's all. This game has finished. Over here, Awas Ruby has won this game by 16 runs. Well done, both the teams. So with that, we have our 4 teams. It is going to be Macaco Opal taking on Green Toppers in the final. And then for the third position, it is going to be Awas taking on Gem Experience. I would request the groundsman quickly get in. Groundsman जल्दी से आ जाए और वो बाउंड्री बना दे वुमेन्स के मैच के लिए. ग्राउंड्समैन जल्दी से जल्दी आ जाए, पिच छोटा कर दे. अंपायर जब तक वो कार्य हो रहा है तब तक आप अपना भोजन कर ले फटाफट. एक बार ये म्यूजिक बंद कीजिएगा प्लीज. वेल फ्रेंड्स, वी हैव अमंग अस RWA प्रेसिडेंट राजीव स्वरूप सर. आई वुड रिक्वेस्ट, आपने मैच देखा, कैसा लगा सर? लेटर तो ठीक है. आइए, मतलब एक बार कैमरे पे आइए सर प्लीज. आइए. ऑर्गेनाइजर्स अमित, सौरभ, अमन, लोकेश एक बार इधर आए. RWA प्रेसिडेंट राजीव स्वरूप सर अपने साथ हैं, तो वी वुड रिक्वेस्ट हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स. हाउ डिड ही फील अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग द मैच? यू विल स्पीक ट्वाइस सर, अभी एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन सेरेमनी आल्सो सर. हाउ यस सर, सर प्लीज. When I was entering the stadium, I was seeing the number of cars which are outside, and it was almost like another regular IPL match. So I'm so happy that आपने इतना enthusiasm generate किया है, and the quality of the matches and all was very good. काफ़ी practice आप लोगों ने की है, and the keen competition which is there. We're looking for a more exciting final, and what comes after that. Thank you. थैंक यू राजीव सर. हमने जो ये ऑर्गेनाइज किया मैचेस ऑर्गेनाइज किए, इसमें हमारा एक ही वो था कि भाई लोग एंजॉय करें. और जिस तरीके का आप पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, हर फैमिली से एक ना एक जना ज़रूर खेल रहा है. और इन छोटे बच्चों को देखिए, इनके चेहरे पे खुशी देखिए जिस तरीके से ये इन्वॉल्व हैं. और अब आप विटनेस करेंगे फीमेल्स का नेक्स्ट 10 ओवर्स, इनमें विनर रनर डिसाइड होगा. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रुकें, और उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले मैं आपको बता दूंगा. और हमारे साथ में स्टेट मैनेजर मिस्टर प्रशांत भी हैं. प्रशांत, कम हियर. सन सिटी प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन one of the co-sponsors. They sponsored 50,000 rupees. So he is representing Sun City. So I would request Prashant also to say a few words. थैंक यू एवरी ऑल. मतलब जैसा सर ने कहा कि गाड़ियाँ देख के सच में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हर साल की जगह हर 6 महीने में इस तरह का मैच होना चाहिए. लेकिन प्रशांत, हर 6 महीने में इस तरीके का मैच होना चाहिए, लेकिन घास पे स्प्रिंकलर्स नहीं चलने चाहिए. ये जो फीमेल्स हैं ये कहाँ जाएंगी यार प्रैक्टिस करने, बताओ. तो इसलिए अब हम 6 महीने में करा देंगे, हम 3 महीने में करा देंगे, पर स्प्रिंकलर्स बंद करिएगा. थैंक यू. Yes, the second innings of the women's match will begin over here. So the 4 teams are like this. At the top it is Macau Opal, then followed by Green Toppers, then Awas Ruby, and at the 4th position it is Gem Experience. So in the final it is going to be Macau Opal taking on
स्टार्ट है देख या मैंने इनकी कौन दिखाया पहले The first match which was played between Green Toppers and 12 Pleasure. In that game, Green Toppers won that match with 8 wickets. And the player of the match of that game was Navam Kothari, for his good fine bowling over there. 2 overs and 10 runs, 1 wicket. He was economical. Second match was played between Capital Blue Topaz taking on Macau Opal. Over there, Macau Opal won that game by 60 runs. And player of the match, Captain Amit Toshniwal for his fine 78 not out. Moving forward, next match it was Awas Ruby taking on the Gem Experience. In that game it was Awas Ruby who won that game by 16 runs, and player of the match in that game was Lokesh Abhi Chandani. 2 wickets in his 3 wickets he picked up, conceding 8 runs. That was a good performance from Lokesh, the captain, setting a tone over there. So now let's go down to Amit, who will be having a word with the physio. तो हाँ, हमारे बीच में हमारे फिजियो पार्टनर यहाँ पे वेलोर से मनी राम जी भी हैं। मनी राम जी और उनकी टीम ने यहाँ पे पूरी फिजियो सर्विसेज मेल और फीमेल के लिए प्रोवाइड की हैं। मनी राम जी एंड द वेलोर क्लिनिक, वेलोर जस्ट ये ब्लड बैंक के पास ही बाहर है, एंड इट इज अ वंडरफुल स्पोर्ट्स क्लिनिक जहाँ पे कई आईपीएल प्लेयर्स, कई नेशनल लेवल के प्लेयर्स रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो मनी राम जी आप थोड़ा सा आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल। बेसिकली ये स्पोर्ट्स वीडियो जनरली जब स्टार्ट किया गया था तो के साथ स्टार्ट किया गया था मैक्सिमम ऑटो मेन्यू है ऑटो मेन्यू में से चले बैंगलोर दिल्ली बाहर जा रहे थे। 8 साल पहले विजन के साथ शुरू किया था, खुशी इस बात की कि जयपुर से बाहर जाना रोका ही नहीं और 30% प्लेयर्स आउट ऑफ राजस्थान से प्लेयर आ रहे हैं अपने पास। और अभी रिसेंटली डॉक्टर डी तोमर हमारी जो डॉक्टर डायरेक्टर है दिल्ली कैपिटल टीम के साथ एसोसिएटेड है, साथ में राजस्थान आर्टिया टीम के अंदर हमारा कोटा टीम के साथ और सीनियर टीम के साथ भी लोग एसोसिएटेड। कैमरा कैमरा तो वनी राम जी जैसा कि आपने बताया दीप प्रिया जो आपके एसोसिएट डायरेक्टर है वो दिल्ली कैपिटल आईपीएल टीम से पीजीओ है और आरपीएल के कई खिलाड़ी और कई टीम को आपने स्पॉन्सर किया है, सपोर्ट किया है, उनके फिजियो पार्टनर बने। तो यहाँ पे अभी करंटली आईपीएल के कई प्लेयर आपके यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, कुछ नाम आप प्लीज बता सकते हैं? आईपीएल प्लेयर के अंदर से अभी जैसे राजस्थान की बात करें तो सभी लेवल कमलेश काकरकोटी, इसके अलावा रणवीर और डी चौधरी। बाहर की बात करें तो अभी चेन्नई सुपर किंग के साथ में अभी जो रिसेंट आकाश सिंह है, साथ में अभी कमल कुलकर्णी, अर्जुन तेंदुलकर, ऑलमोस्ट करीब 20-25 आईपीएल प्लेयर्स। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट कुछ अदर एक्टिविटीज में भी आप कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट सर्विसेज देते हैं? स्पोर्ट्स इंजरी से बेस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि उसका इंजरी प्रिवेंशन मोर देन इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। अगर आपका प्रॉपर बायोमैकेनिक्स करेक्शन नहीं है बॉडी का या उसका प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा। तो बेटर पार्ट हमारा होता है कि प्रिवेंशन बेटर फोकस है हमारा, इसको अपना मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग के थ्रू असेस करते हैं। आफ्टर दैट वी ट्राई टू की इंजरी कम से कम ऑन फील्ड ट्रेनिंग एंड इन फील्ड वो ट्रेनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड दो सर ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाएं। हेलो सर, थैंक यू सो मच. Thank you so much for Manirami and Vellore Clinic. Let's have a round of applause for Team Vellore Clinic. Thank you very much. Yes, Vellore Clinic doing a fabulous job over here, making sure the players are fit and fine, playing the game. Umpires are requested to. So second innings of this women game to commence over here within a few minutes. 51 is the target over here for silver mark over there. Can they get it over this target quite easily? 60 balls, 51. Till now, 3 games completed. 3 games, player of the match.
First match it was Naman Kothari. Second game Abid Toshniwal. Last game Lokesh Abhichandani. These are 3 players of the match till now of the 3 games which have been completed. There are 2 big names waiting for the 3rd position. It is going to be Awas Ruby taking on Gem Experience, the team we just finished the game. And in the finals, it is going to be Green Choppers taking on Macaco Opal. Who is going to emerge victorious in those 2 games? Just waiting for the action to begin over here. Amit and his team have been fabulous in all departments. On the other hand, Anuj and his team has also been very good. They've hardly allowed any runs to be scored in the first game. They were really tight with the bowling and the fielding was brilliant from them. The batters finished the job well in time. Now, the women's are just waiting under this. Not too hot, but still, yes, there is warm out in the middle. Amit, who just went down in the middle as a coach, is giving the instruction where the field should be. Who should be standing where, what could be the positions for you all. Umpires, everyone is waiting. खेल प्रारंभ हो. थोड़ी देर पहले आज बड़ा मुकाबला. चालू करो. I would request the batters to quickly get in. $51 is the target over here. जिस तरीके से ये पूरी की पूरी टीम जा रही है, ऐसा लगता है दोनों बल्लेबाजों क्रीज तक छोड़ के आएंगे ये सारे. ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम अंदर जा रही है मैदान में. सीमा रेखा तक ही छोड़ेंगे ऐसे कह रहे हैं. अपनी टीम को बुलाते हुए कप्तान. 51 का लक्ष्य मिला है यहाँ पर. क्या इस लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं देखना होगा. सलामी बल्लेबाज तो 2 ही जा रहे हैं यहाँ पर. हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपकी बाउंड्री हुई, आप बैठ सकते हैं. आप रस्सी के अंदर जाके बैठ सकते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि आपकी बाउंड्री वो कोन्स है. इस मुकाबले के अंपायर पीटर पार्कर और उनके साथी जय सैनी.
नहीं नहीं इसका यार जयपुर के साथ खेलते ना ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है 51 रन का लक्ष्य मिला यहाँ पर। पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों बल्लेबाज पहुंच चुकी है क्रीज पर और उनकी पूरी टीम बड़ी जोश में नजर आ रही है, हौसला बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों का। थोड़ा जल्दी करेंगे अंपायर, समय का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी मैच फीस काट ली जाएगी। Here we go. Second innings to get underway. First ball. Low full toss, working it towards the onside. Off the mark, straight away with a single. लगता है सिर्फ कप्तान ही है That's in the air for a while. Single. Two singles of the first two balls. Down the leg side, that's going to be wide. Amit seems to be a little bit worried because his team needs to defend a total of 51 from 60 balls. Hasn't started that well. Dot ball. This is what they need to do. Just get in the dot balls. Don't allow the batters to score the runs quite easily. Too early into the shot, but single will be completed over there. On the pads, worked away towards the onside, going for a quick single. That's good running between the wickets. I think next year we could see the kids game also added to the tournament. In the air, could be the first blow, and it will be first blow. So they've lost the first wicket at the score of 4. 4 for 1. अरे ये लोग अपडेट नहीं करते यार ये जो अभी पूरी टीम देखी ये जो रेड वाले हैं क्या नाम है कौन सी पहले वाली जो अभी बैटिंग के लिए गई है ये लड़कियों वाली टीम हाँ सिल्वर मार्क्स ना हाँ ठीक कमेंट तो आप ही कर रहे हो ना हाँ That's a good shot. Straight away, getting off the mark. That might go for a 4. No, doesn't get there. Just a couple. तोड़ूंगा नहीं प्लीज हिट बाउंड्रीज यार जीतने के लिए Yes, that's absolutely right. You need those boundaries to win the game, but they're going well at the moment. No, actually, I know because my sister is also in the team. That's why I'm saying. What's your sister name? Khushi Meena. She's gone to batting? लोकेश जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। नहीं वो तो अच्छी बात है, पर मुकाबले जीतने की खुशी और अलग है आपके चेहरे पे। नहीं हाँ तो लीडरशिप बोर्ड में नहीं हूँ मैं बॉलर्स में ये बोल रहे हैं कि लीडरशिप में इनका नाम नहीं आ रहा है उसमें लीडर रिफ्रेश करके देखा इनका नाम नहीं आ रहा है उसमें ये ऐसा कह रहे हैं कि लीडरशिप वाले में इनका नाम नहीं है वो चेक करो
ये डॉग को थोड़ा सा साइड में बैठा दो ना, ये परेशान करेगा सबको। That's 4 runs. That's a good strike. मालूम नहीं उसने क्या किया, कुछ ग्लिच है सर, प्रॉब्लम है। समथिंग टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल सर अनाउंस करते समय बिल्कुल सर, टैली कर लेंगे। आपका नाम बता देना, कर लो ना, इनका नाम नोट कर लो कहीं इनका, जो जानते हैं। हाँ। That is a good strike. The last ball. Win for a 4. ये कौन कौन खेल रहा है अभी दोनों इनके, क्या नाम है दोनों के जो खेल रहे हैं अभी? एक मिनट मैं फोन में देखता हूँ, यूट्यूब पे दिख रहे That's in the air for a while. Fielder standing at extra cover. She does well, making sure that the just only a single. Straight to the bowler for no runs. That's a good shot. Just for a single. Mid-off is standing, touch straighter. That's a good shot. And well fielded over there by Palak. In the air for a while, fielder in the deep. She can't get there. That's 4 runs. And the entire team is dancing in happiness. That is a good shot from Pragya. Now she'll get off strike. Kushimina on strike. Neabed bowling this over. Both the batters have hit single fours, and now with that Kushimina gets clean bowled. 21 for 2. .30 more needed of 43 balls. 8 wickets in hand. It's gettable, not that difficult. And if the Pearl team has to win this game, they have to make sure they're picking up wickets and not conceding too many runs. Kushi was disappointed by herself that she was playing so well, got out. New batter, taking the guard out in the middle. It's Rishika. 2 games, 8 runs, highest of 8. This is her second game.
First ball, a low full toss, which was dipping. She wasn't able to put that one away. After 3, score is 21-2. भैया थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाओ थोड़ा इधर. Power play is done, and after power play, score is 21-2. That's a good shot. Fielder in the deep. She can't stop this one. 4 runs. Another good shot, and could be back-to-back 4. Yes, it is going to be back-to-back boundary. Two good strikes over there towards the onside over here from Pragya. She's moved on to 20 from 10 balls, going at a strike rate of 177. That's really nice. That will be called a wide. Pressure on the bowler, Sachi Bansal. She has to produce a wicket. She's leaked away too many runs in this over. That was down the leg side, in the air, and out of the hands. That was in the air. That should have been taken. It's been put down. Straight into that shot, fine leg fielder. She got there, but just couldn't hang on to that one. This will be called a dead ball. 2 bounces are not allowed as per this tournament. It will be called a dead ball if there's a 2 bounce ball reaching towards the batter. 2 or more than that, with the ICC rules nowadays, 2 bounce, 3 bounce, and if it reaches the batter, it will be called a no ball. But that rule is not applicable over here. That's a wide outside off stump. Not too many runs required over here. Just 18 more needed of 39 balls. Not too much pressure over here. That's a good strike. That will go for 4. Yes, it will. That was an expensive over. A lot of runs came in that over. Let the scorer up the score, then only I can tell you. What the स्कोर को मार दो यार, मर्डर कर दो.
Yes, with that boundary now, score moves on to 37. 38 balls, 14 needed. 2 more balls left of this over. And you could see the energy of the kids. The way they're excited to see the batting team doing a fabulous job. Hardly you could see anyone on the offside. Looks like the onside territory has been captured over here by 7 or 8 fielders. Can she find the gap? She still goes towards the onside. Half stopped over there by captain. 1 more ball left in the over. Yeah, they're going really well. Rishika batting on 1, Pragya batting on 25 from 12 balls, 4 fours in a innings till now. 17 coming off Sachi's this over. And will this be taken? This might just go over the top and might just race for 4. Has she done well? Looks like she has. She has saved few runs for the side. 2 more runs to the total. And that's the end of the over after 4. Score is 40 for 2. 11 needed of 36. Oh, sorry. Yes. Team Jam Experience and Team Avas Ruby, please, captains, toss के लिए आ जाए फटाफट. Team Avas Ruby, Team Jam Experience captains. अमित जी 6 ओवर के बाद कराने अब तो 4 ही हुए हैं. जानवी है ना बच्चा, बैठ जाओ बेटा, पीछे नहीं दिख रहा किसी को, नीचे बैठ जाओ. 4 ही ओवर हुए अभी तो. 11 रन तो बुला लो 11 रन चाहिए पॉइंट तो आपको कराते हैं. हाँ कितना हो गया स्कोर? 11 रन चाहिए आपको. अरे एक ओवर का काम है बेटा 40 हो गए. That's down the leg side. I would request both the captains of Gem Experience and Avas Ruby to come for the toss. I would call Prashant ji. Just please be here for the toss. Prashant ji. 9 more needed. आगे आ जाओ. आवास रूबी कैप्टन, टीम आवास रूबी कैप्टन. That's in the air for a while. Just a single. 8 more needed. लोकेश जी, कैप्टन टीम आवास रूबी. Having some sweets. Will the toss be that sweet for him? So, यहाँ पे है टीम आवास रूबी से लोकेश जी और टीम जैम एक्सपीरियंस से सौरभ गोयल. एंड फॉर थर्ड एंड फोर्थ द सेकंड रन अप के लिए नेक्स्ट मैच होने वाला है, उसके लिए टॉस है. प्लीज. That's a good shot. This will race away for 4. Flip it. Heads is the call, and it's come down as tail. So what are we going to do? We're going to bowl this time because we need to restrict them less than 50 runs. Very excited? Very excited, very excited. And what do you have to say about this tournament? This tournament has been amazing. I mean, few of the organizers have done a really excellent job. I think we have the trophy. I'm waiting and I'm eyeing one of those for those. You're playing for the 3rd position. All excited. All the best for the game. So batting first. Last time you bowled first. This time you want to reverse the result. Yes, reverse the result and better. Opener of Team Jam Experience, be ready. We'll win this time for sure. Is there any change in your playing 11? No, same team. And what do you have to say about this tournament? It's amazing, 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 and the auction and the tournament is next level. I believe the organizers have set the level very high for the upcoming tournaments, and I think whole of the Jaipur will be looking forward for the next GOI tournament. All the best for the game. That's it. Over here, Avas Ruby has won the toss. They're going to be bowling first over here this time around. Team Avas Ruby requested to be on ground next 5 minutes. Team Avas Ruby. 47 is
An opener batsman of the team, Jam 4 experience. more be runs ready. needed over here. और अभी कोलकाता से खबर आई है कि भारत ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। देखते हैं आज बर्थडे बॉय कितने रन बनाते हैं। हर किसी की उम्मीदें यही है कि विराट कोहली आज 100 नहीं, 150 नहीं, 200 बनाए। वर्ल्ड कप में उस दोहरे शतक की जरूरत है। Yes, everyone knows India is playing against South Africa. Both the teams have been doing fabulous job in this tournament. India undefeated. South Africa has lost 1 game. 4 needed. 1 hit away. And we're going to have the winner. Dot ball. Plenty of balls left. No, it's a wide call from the umpire. It's come a late call. 3 needed now. They're all waiting for that winning shot so they can rush in and enjoy the moment. That's in the air for a while, but only single. 2 more needed. Ah, that's a winning shot. That will go for 4. Way back, Silverberg is the champions. Boundary to finish off in style. Yes, it is 4 runs. Bamuva, something to Ravi Shastri. बच्चों का एक मैच था। Groundsman. Yes, I would request groundsman जल्द ये कोड हटाएं। 3rd पोजीशन के लिए जो मुकाबला है ताकि वो शुरू हो सके। ग्राउंड्समैन जल्द से पहुंचे मैदान के अंदर। सर नेक्स्ट मैच चालू कराओ फटाफट। एक बार अनाउंस करके कांग्रेचुलेशंस तो कर दो टीम को। नो So well played, team Silver Mac Galaxy. Many congratulations. Well played. Yes, fabulous job over there by Silverberg Galaxy. They won this game by 7 wickets. And the player of the match of this game is Manisha Parnami. Wonderful performance from Manisha Parnami. विकेट लिए होंगे नीचे के स्क्रॉल पर। He has 2 overs, 9 runs, 3 wickets. Outstanding performance from Manisha Parnami. She is the player of the match in this game. 4 games done, 2 more to go. And then the closing ceremony to conclude this day. Narendra ji, please send one staff to commentary box. Narendra ji. Fabulous games we have seen till now. भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया। मैं भैया हमारा वो ज्वेल ऑफ इंडिया का टूर्नामेंट चल रहा है अभी, वो यहाँ जयपुर जाना है। क्या नाम है? 6 बजे तक यहाँ से फ्री होंगे। राहुल टूर्नामेंट उठाएंगे, बढ़िया। कुशाल मोचांगड़ी कुशाल ही तो है, कुशाल सही तो फिर हाँ जो
Team House Ruby, please be on ground. Openers are ready for Team Jam Experience. Yes, we're all set for the action to begin over here. This is a decider for the third position between Awas Ruby and Gem Experience. They'll be playing for that third position over here. Captain of Awas Ruby winning the toss, deciding they're going to be bowling first this time around. Captain sort of was excited. He wants to reverse the result. He wants to put the runs on the board. So, in next 20 minutes, Team Green Toppers captain and Team Macaco Opals captain be ready for the toss. Next 20 minutes, Team Green Topper captain. Mohit taking a treatment from the physio. Looks like he's not 100%. Doubtful to bowl today in this important game. But seems like physio has got him fit and ready.
Straight to that cover field just for a single. He's played two good shots, but he's not been able to place it into the gap. Dot ball. अरे है ट्रॉफी है एक ट्रॉफी है वो फीमेल रनर अप की Just a single, tucked away towards the onside. Just needs to make sure that the batters keep on rotating the strike if the bowlers are not offering those balls where they can put them away for a 4 or a 6. At the moment dealing in singles. After 1 over scorers. 6 without loss. पानी पानी की बोतल में डाल दो वो देख वहाँ पड़ी है वहाँ खत्म हो गई Down the leg side, that's going to be called a wide. This is the match going on for the third position between Nawaz Ruby and Gem Experience. आ जाओ बॉल कहाँ गया आ जाओ पानी की बोतल Sarul sparring on 2 from 5 balls over here. 7 without loss into the second over. Abhinav Gokru. Oh, that should have been stopped over there. Abhinav won't be happy. That should have been just the 2 runs, but it's indeed of a double. That has cost over 4 runs. 2 more additional runs. Sarul and Ankit Gokru, 2 batters out in the middle. Abhinav. Gokru has conceded 5 runs from his 3 balls. Has to come back well. First over bowled by Mohit Parnami was good. Just gave away 6 runs in his first over. तेल को बोलते हैं सनस्क्रीन ये जूती है How are you, Akshara? How's the thing? They've got the protection in the deep. Did you put the cold pack or something? पापा ला रहे हैं बॉटल आपके लिए पानी पीना है ना आपको पापा ला के आए आपकी बॉटल में से पिला दूँ आपकी बॉटल में डाल के 12 without loss. Looking good, looking positive. That's in the end. Put down. आगे पापा बॉटल लेके आ गए सिया के लिए इसने सिया अयाना ने खाना कुछ खाया है क्या Just a single towards the onside. Thought was there to go back for a second, but will only get a single. आप काम ही क्या Both the batters trying to get those runs quick and fast, but not able to get that. इन जेनरिक भी After 2 scores, 14 without loss. थोड़ा सा तो लगता ही है कहीं बहुत बुरा लगा आज मेरे को इतना बुरा लगा जो फील्डिंग का प्राउड था ना वो प्राउड खत्म हो गया मुझे बहुत मुश्किल आज जो फील्डिंग का प्राउड था ना वो प्राउड खत्म हो गया ये पकड़ना सर ये पकड़ो सारे डाउन थे आप लोग तो सारे पूरे मैं जबकि शुरू से कह रहा था तेज शॉट खेलने हैं तेज शॉट खेलने हैं
बढ़िया शॉट खेले उन्होंने जो हेलो बोलो Third over, last of the power play. Single over there. It's 15 on the board without loss. क्या खाया These two looking good, looking positive. जैसे कि पाव भाजी खाई, पाव भाजी छोले भटूरा खाया। किसी को फ्लावर चाहिए? पापा स्कोरिंग खोल के देना किसकी? मम्मी लोगों की। हेलो। That's a good shot off the back foot. They have got the protection. Ravi does well, making sure that the batter only gets a single. Full toss ball. That's been put away. It's been called no ball. And 4 runs. Time for a free hit. Good batting. Straight to that fielder at a deep square, backward square leg for a single. Ankit Gokru batting on 4 from 4. Saral now looking positive. 2 fours has got in his innings. Last over the power play after this field can spread. It's going to be called a wide. बल्ले से बना है. Down the leg side, another wide. Commentary box के बगल में पर्ल की टीम चर्चाएं करती हुई कि उन्होंने कैसे रन बनाए. That's a good strike. That will be 4. Yes, it will be. Full toss, this one been hit past the bowler, but just only for a single. With that, we have done with the power play after 3. Score is 29 without loss. इसके बाद बस फाइनल है ना? बस नहीं है, सिर्फ फाइनल. बस ही तो. सिर्फ में फर्क है, बस में क्या? The power play is done and score is 29 without loss.
Now bowler just checking his field, where the fielders are placed. 2 fielders. 3 fielders now, they have it on the boundary ropes. Bowled him. Lokesh Abhichandani, who was the player of the match in the last game, straightway comes into the attack and picks up a wicket. Captain gets rid of Ankit over there. And now the experienced campaigner, Dinesh, will walk out in the middle. $29 for 1. New man out in the middle, Dinesh Gupta. Fabulous job done over here by the organizing committee, getting this wonderful tournament over here at Jaipur Cricket Ground. Dinesh Gupta getting off the mark straight over the single. Getting a single down towards the fine leg. Two runs and a wicket till now from Lokesh, make it 3 of this over. He's bowled well in the last game and bowling well now in this game. He's keeping the things tight, not allowing the batters to score those runs quite easily. Playing on the front foot, wants a run, will not get the run. That was a good call from Dinesh, not to go for the run. If they would have gone for the run, that could have been a silly run over there. And even, who knows, direct hit could have produced a wicket. An appeal for a caught behind. He wants to take the review. The umpire, it's a referral for caught behind. Yeah, TV umpire to director. Yeah, I've checked it. It's a legal ball. Can you just show me the footage? Yeah, roll in, roll in, roll in. Okay. I see the ball is close to the bat. Can you give me Ultra H?